देखो, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं ब्लॉग को। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्लॉग पे रिएक्ट नहीं करेंगे। हम लोग बहुत सारी वेब सीरीज और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो यूट्यूब पे मौजूद है लेकिन आप उन चीजों को नहीं देखते हो, उन पे रिएक्ट करेंगे। आप बहुत सारे इंडियन ब्लॉगर को देखे होंगे। अगर इंडियन ब्लॉगर बाहर के देशों में जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रीट, मतलब बहुत अंदर तक या फिर बहुत अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाते हैं। लेकिन फॉरेन ब्लॉगर्स का एक चीज हमको बहुत अच्छा लगता है, वो ये लगता है कि वो बहुत डीप जाते हैं और बहुत अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखते हैं ब्लॉग और उसके बाद बात करते हैं। This is me with Japan's most dangerous gang, the Yakuza. How many people have you? Don't ask stupid question. And for the next 72 hours, I've been granted special access behind the scenes into their ruthless, brutal underworld. Oh, there's a fight. To understand their shadowy businesses ब्लॉग and स्टार्ट their हुआ, deadly way of ब्लॉग lifestyle. देखते हैं Japanese और Yakuza. जहां पे हमको जो सही लगेगा या फिर मेरे हिसाब से अगर हमको जो लगता है इस ब्लॉग के ऊपर, मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो में शेयर करूंगा। और आपको भी जो लगता है आप अपना रिएक्शन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ मेरे हिसाब से हमको ये लग रहा है, क्योंकि सिर्फ ब्लॉग देखना नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सही है गलत है, हमको क्या लगता है आप उस पे बताना भी है। और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताइएगा कि नहीं मेरे हिसाब से ये सही है, मेरे हिसाब से ये गलत है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आइए देखते हैं ब्लॉग को। सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट हुआ, गाड़ी आया लेक्सस, नंबर प्लेट हाइड है लेक्सस। लेक्सस गाड़ी, अरे लड़की और दो माफिया। Welcome to Japan. So glad to see you again. म्यूट कर दिया यार सबटाइटल्स। I am a little bit nervous, I'm not gonna lie. मिस्टर Well, Sweet, let me sweet introduce man. you to my team. अली, He's my ये younger brother, ये जो दिख रहे हो aiming to ना, become a politician, शायद ये बॉस है। and he is the boss of my black business, the backbone of my life. ओके And her? Well, she is my assistant. That's your sister. ओ ये छोटा भाई है और ये उसका He said Backbone he है, the car. मतलब राइट This हैंड is just the little toy. The big toy is at home. एंड असिस्टेंट है You भाई। can probably buy a whole house for सॉरी that. मजाक कर But रहा I'll था। show you something even better. Not even 5 minutes into meeting the former Yakuza boss, we left Tokyo and Oh, we made big our way to an backbone. airport at और ये Yokohama बॉस है City, where we were शायद। greeted by a $7 million helicopter. And this is when Mr. Mirak. Hashimoto promised me that the next 72 hours would be life-changing. He was not only Lexus going से to give me a Mirak rare आ glimpse into what it means to be a former Yakuza boss, $7 but he was million also going to show me हेलीकॉप्टर। the new business ventures he is now. वहाँ गैंग के लीडर का नाम जो अभी आप लोग देखे हैं उनका नाम हैशिमोटो है शायद। I'm on a helicopter. हाँ भाई वही है या फिर और बहुत सारे गैंग लीडर हैं। ये देख नहीं Wow, ये this जापानीज is क्लब है। kind of exciting and दिस scary इज at the माय same time. हेलीकॉप्टर। At this point, I was Welcome. shitting myself. Here I am sitting next to one of Japan's most infamous and dangerous former Yakuza bosses, and yet I was even more terrified of the heights. In my crazy life, I face a lot of difficulties and challenges. But when I am this high up in the sky, my problems seem so small and यकूजा, insignificant. In these moments, the noise जैसे हमारे fades away. इंडिया में लॉरेंस बिश्नोई गैंग चलता है, वैसे ही जापान में यकूजा गैंग चलता है। Think simply and see clearly. I run various companies in Akihabara, where I work with various people through my vast connections. Many refer to me as the boss of Akihabara, but in fact, it goes much more beyond that. I have brothers, not only in Akihabara and Tokyo, but all over अराउंड द Japan and वर्ल्ड, around the world. मतलब हर देश में हाथ फैला है भाई। As we continued to fly higher, Oh, Mr. Hashimoto was Hashimoto. eager to dive into his new business ventures. He wanted to show me the world he is now पता है building. एक सवाल है मेरे मन में कि भाई अगर इतने बड़े गैंग का लीडर है तो खुलेआम कैसे घूम रहा है भाई, Venue over there will host बिना our किसी MMA डर के fighting event in जापान में 2 घूम days. रहा है भाई, हेलीकॉप्टर आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, और इतने बड़े गैंग का लीडर है तो खुलेआम कैसे घूम पा रहा है? जापानीज पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? मेरे हिसाब से तो भाई जापान में भी करप्शन है।
He made me an offer, and it's an offer which I obviously couldn't refuse. I would like you to इन join लोग me का as the guest बिजनेस of honor एमएमएम at my फाइटिंग। fighting event. ये सब चीज तो फालतू है। In the helicopter, and you are a former Yakuza boss. Are you gonna throw me out? That will depend on how you behave. As we continued to fly over Yokohama City, getting a private tour by a former Yakuza boss, I started to realize that the next 72 hours were पता है not going वीडियो to को be पूरा देखना, आगे और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। ब्लॉग इंटरेस्टिंग है। पता है इस तरह का ब्लॉग आप लोग देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बाहर के देश दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हमारे देश के ब्लॉगर हैं उनका ब्लॉग अच्छा नहीं होता, उनका कंटेंट बढ़िया नहीं होता, वो लोग भी बहुत अच्छा कंटेंट दिखाते हैं। लेकिन आप इस टाइप के ब्लॉग को देखोगे तब आपको बाहर के देश दुनिया में क्या हो रहा है इन सारे चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। ब्लॉग को देखना, ब्लॉग का भी शुरुआत हुआ है, ब्लॉग में एक से बढ़कर एक चीज देखने को मिलेगा। और फिर हम लोग बात भी करेंगे कि जहां हमको समझ में नहीं आएगा मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि ये चीज हमको समझ में नहीं आया। और अगर आपको भी कुछ आपके मन में कुछ सवाल हो या फिर किसी प्रकार का कोई ओपिनियन हो, जवाब हो कि नहीं हमको ऐसा लगता है ये गैंग खत्म हो गया, इस गैंग का ये है, या फिर किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तक जहां हम ब्लॉग को देख के समझे हैं हमको लगता है कि गैंग का जो लीडर है वो इनके साथ जो बैठा हुआ है मिस्टर हाशिमोटो। अब आगे देखते हैं क्या है भाई। कल का अब कल Has always been my way of dealing with life. 大事なもの人としてね。これも命、これも This is life too. これも一つの命だ。 We must respect this insect's life. ओ ये ग्रेवयार्ड है जहाँ बॉस उसके पापा उपा सबको। Please excuse me. ओ मिस्टर हाशिमोटो ये यही गैंग का लीडर है मेरे हिसाब से, जहां तक इस ब्लॉग में दिखा गया मिस्टर हाशिमोटो। 親父は अब देखना पड़ेगा इनके बारे में कि कौन है मिस्टर हाशिमोटो। ご飯で本当はね It's Let's ironic, secret isn't jala. it? As a living person, Oh. you have to drink healthily, Papa ka so you're favorite gonna tha. die. But once you're dead, you can drink whatever you like. But I still bring these drinks because it's how I remember him. 生きてるって大変だよ。 Oh, Dad, living is tough. ओ Seeing a Papa former favorite Yakuza drink boss था, being so इसीलिए emotional graveyard really drink took है। me by surprise. And so I was keen to ask him about what his late father meant to him, but his response really shocked me. Can you explain to me what your father? ओ ये 亡くなって亡くなっちゃったっすけど、 He was the meaning of life for me. He was more of a dad than my actual dad. Let me tell you something about him. 無責 He was an incredible person, but he was also an irresponsible man. When I was a child, I was always by his side. But when it was time to enter the खानदानी enemy's बिजनेस लगता है territory, भाई, he क्योंकि would भाई go it alone and would never बाप का tell बिजनेस anyone. है, बेटा संभाला He है। would take और his two ब्लॉग में guns, देखिए हो कि भाई hide बाप them भी under the mat of the back गैंगस्टर है, seat, and tell जैसा the बेटा driver बता to रहा head है कि straight मेरा to बाप the भी rival's गैंगस्टर था, headquarters. 2 बंदूक लेके घुस गया। That's the तो kind of ये man he खानदानी was. बिजनेस है। それがかっこいいなと思ったし。 As I grew यहाँ भी older nepotism and led चल my रहा own है। gang, I faced a similar बाप का बेटा situation that business landed है। me in prison. I too didn't tell anyone, and I went it alone. なんで親父は And that's when I realized I had been imitating my dad, keeping others away from me in order to protect them. 事務所に電話しなかったのかなと思うんだけど、親父は Over time, I understood his irresponsibility in a new light. 無責任 It was a form of leadership. In sacrificing himself, he shielded the people around him. 本当の責任 For me, it was a great life lesson to realize that true responsibility actually laid in that irresponsible way of doing things. になったし。でも People loved him and respected him because he understood and embodied one simple fact. Every man dies, but not every man truly lives. That's why there's no way I can turn my back on being my dad's child. I will become his successor, a godfather, and a politician. He will not just be the father of any politician, he will be the father of the president of Japan. And since he shaped me into that president, I will never give up. 手が諦めない。 At this point, I was genuinely taken back. Here I am with one of Japan's most infamous and dangerous